Namaste, namaste, Manoj नमस्कार ji. नमस्कार पंकज जी नमस्कार. यस. As I was just telling you, this is the therapy session that we all need. At least I need. And thank you for, making our Monday or we record on Monday. मंडे So जी. it's just पूरे week की या पूरे दिन की जो physical mental थकान है वो दूर हो जाती है. सर संगीत में इतनी शक्ति है, संगीत की जो blessing मिली है हमको सर, एटलीस्ट अप्रिशिएट करने की blessing मिली है, तो वेरी वेरी थैंकफुल. आज कौन सा राग लेके आए हैं आप? हाँ. So today, I think last week we had talked about doing a folk rag. We did हाँ an afternoon melody last week. Then we said that we'll talk about a semi-classical rag today. And this is one of ऑलराइट, the rags that has originated from the folk music of a region. क्या बात, Just like they say, Pahadi वाह, is हाँ, originated from the mountains of Kashmir. And just yesterday, I was reading that Pilu, यस, एंड about which we उत्तराखंड have भी, या, spoken, comes from the Gangetic हाँ, Plains. हाँ, And today's rag हाँ, हाँ, comes from the desert region of Rajasthan. और ओह यस, मैं सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि पंकज जी ऑलराइट, हमारे जो हैं वो राजस्थान से ही हैं, पाली राजस्थान. तो बिल्कुल, शायद बिल्कुल, उनके होम टाउन का बिल्कुल, राग हम लोग आज करने वाले हैं. एंड दैट इज गोइंग टू बी राग क्या बात, मांड. Mand, one and only Mand, Ragman. राग मांड. So immediately when I hear Mand, of course we all I guess think of Lekin and Pakiza one song and Reshma aur यस. Shera and probably Gamhe. यस. So yeah, yeah, yeah. यस. Take it away. आप, yeah, यस. यस. बताइए, बताइए. सो राग जी, जी. मांड, also called as Mishra Mand, Okay. originates from the folk music of Rajasthan. जी. Basically, it has all Shuddha swars. All right. And it's like a Sampurna rag. Well, as is the case with all the semi-classical rags, they necessarily don't have an aroha and avroha, but instead they have certain phrases, right, by which you can हाँ, yes, 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 identify yes, them. तो ये मिश्र yes, मांड yes. जो है वो भी उसी तरह का राग है. जी. और ऑब्वियसली हम इसको किसी भी समय गा सकते हैं. और तो जी. इसके बारे में कल मैं ये पढ़ रहा था कि राजस्थान में जब हस्बैंड्स काम पर चले जाते हैं तो उनकी वाइफ्स जो होती हैं हाँ, उनकी जो लॉन्गिंग होती है वो हाँ, इस राग में व्यक्त होती है. यानी कि द लॉन्गिंग, द सेपरेशन दैट द वाइफ फील्स बिकॉज हर हस्बैंड हैज गॉन yes, फॉर yes, वर्क. yes. एंड as I'm हाँ, sure Pankaj ji, you know that in those areas yes, when I was they just go going to for say work that. they हाँ, don't return back for days together. So yeah, yeah. so because they have to work in the deserts, and it's a very strenuous life that they lead. Yeah. And so And I thought you were going to refer to Mehndi Hasan Ghazal on this theme, so I thought you were going to refer to that, but right? well, let's वो है see. ना, मेहंदी हसन साहब की गजल भी है I'm ना not going इसी to say थीम पे. anything now. Okay, okay, Yes, okay. I know let's what see. you. Yeah, let's see how it goes. केसरिया बालमा जो मेहंदी हसन साहब ने कहा है. Yes. There you go. Well, I knew that you will जी, guess जी. it, but we will be starting with that composition. So normally, All um, right. as all of you know, the way we start our presentation is by presenting the rag in its classical form. But Yes. obviously, Mand being the semi-classical rag, There you we are going to sing this very, very popular so as soon as you talk about Mand, go. Yes. the first, even the first word that comes to your mind is Kesaria. Yes. Yes. And Mehdi Hasan Sahab was originally from Rajasthan. He was Yes. born in Luna district of Rajasthan. Yes. So he always had that affinity towards that region. Yes. And that's why he popularized this Right. particular composition. And this was later taken in the movies, लेकिन Lata ji, especially yes, Lekin, yes, yes, incorporated by Radhanath Mangeshkar ji and sung by Lata ji. yes, wonderful. So, yeah, so like I was saying, so this rag basically depicts the separation that
the wife feels from her husband who has gone for work and not come back Hmm. for a long time, and she does all kinds of stuff by which her husband can come, like praying to the sun god and all that, you know. So so that's what the feeling of Mand depicts inherently. Hmm. So just to talk about certain phrases of Mand. Sure. So sa gama pada ni sa dha pa dha ni dha Wow. pa ma pa ga sa re ma pa dha ni dha pa. Wow. So this is a typical Yes. phrase of Mand. Yes. So we start with Kesariya Balama, just a semi-classical composition, like I said, popularized by Mehdi Hasan Sahab. Set to, so this composition is sung in various ways in different tals. The one that I'll be presenting is in Rupak Tal, which is a 7-beat cycle. So that's the tal which Mehdi Hasan Sahab has used for his presentation. So here we go with Kesariya Balma. Padharo Mhare Des. Mare Des. Yes. This word itself is the tagline for Rajasthan tourism. Selected. Mixer. Tab. Padharo Mare Des. Right. Welcome to my Yes. land. Well, yes. Rajasthan. Chanter 11 slash Yes. off. Yes. Circuity left. Tab 1 slash off. O Marwadno Desrelo O Mane Pyaro Dhora, dhora, dhora. Dhora meaning pure white. White. The sand color which is pure white. Yes. Dhora, dhora, dhora. Vara. Ujli nirmal रेत हो चम चम चमके चांदनी जैसे चांदी राखेत केसरिया बालमा आओ नी पधारो म्हारे देश रे पधारो म्हारे देश केसरिया बालमा आओ पधारो म्हारे देश रे पधारो म्हारे देश
निज थाणे पूजशा भर मोतीरारो थाल हो चनेक बेगा उग जो चनेक बेगा उग जो मारो बादलो रवि शिकार ओ मारो बादलो रवि शिकार पधार हारे देश पधारो मारे देश साजन तुम मत जानियो साजन तुम मत जानियो मोहे उन बिछरत है चैन साजन 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 तुम मत जानियो साजन तुम मत जानियो तुम मत जानियो साजन तुम मत जानियो मोहे उन बिछरत है चैन हो जैसे गीली लाकड़ी जैसे गीली लाकड़ी जैसे गीली लाकड़ी सिलगत हूँ दिन रैन ओ सिलगत हूँ दिन रैन केसरिया बालमा आओ पधारो हमारे देश केसरिया 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 बालमानी केसरिया बालमा आओ पधारो हमारे देश पधारो हमारे देश पधारो हमारे देश वाह वाह वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया। So this was Mand, Kesariya Balma. जी Typical Marwadi words.
and expressing the longing of the wife that her husband comes back soon. And now how was it incorporated in the Lekin movie? A slight change of words, but the same tune. But the interesting part was the song that was sung in the movie was sung in Dadra Tal, which is 6-beat cycle. So that was the interesting part. So Kesariya Balma, I forget the next one. Bavari bole log, log re bavari bole log, Kesariya balma आओ जी. And there's one more version, के तुमसे लागे नैन, नैन रे के तुमसे लागे नैन. शॉर्ट हो गया, तो ये पैकेज शॉर्ट हो गया. हाँ, जो मैन्युअल साहब की कॉम्पोजिशन मैंने गाई थी उसी से हाँ, ली हुई ये दोनों राइट, कॉम्पोजिशन हैं, दोनों रचनाएं हैं, which was incorporated in the movie लेकिन Lekin. यस, And जी, on the one hand we heard Mangesan Saab sing the Thumri Kesariya Balma, the semi-classical composition. And guess what? He has also composed a ghazal in Rag Maan. oh wow, And that is a ghazal by Mirza Ghalib Sahab. अरे And वाह, it's such an वाह, amazing thing that he was able to compose a ghazal, which is not normally done in Mand Rag, although it's a semi-classical Rag, but you don't hear too many ghazals in this Rag, because it's a Yeah. folk Rag, right? So correct, you don't hear ghazals yes. in that Rag in great quantity. But this one was the one that he composed, and that goes अर्ज़े नियाज़ इश्क के सागम पधनी पध प प. सेम, देखिए सेम ट्यून है, सेम राग है, केसरिया बालमा जैसा. अर्ज़े नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, अर्ज़े नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा, अर्ज़े नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, अर्ज़े नियाज़ इश्क के. वाह, पहली बार सुनी आज ये गजल. थैंक यू फॉर शेयरिंग. तो ये पूरा मांड का इसमें रंग जी, आपको दिखता है. बिल्कुल, तो शानदार. ये जी, ये गजल, और फिर हाँ, द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी पाकीज़ा. हाँ, जबरदस्त लेजेंडरी सॉन्ग. यस, सा सा रे ग ग रे ग प प ध प म ग रे ग सा सा रे प ग. थाड़े रहियो ओ बाके यार रे, थाड़े रहियो, थाड़े रहियो, थाड़े रहियो, थाड़े रहियो रे, थाड़े रहियो ओ बाके यार रे, थाड़े रहियो. ये पूरा इसमें. बहुत मांड. बहुत, जी, And what about this one from the movie Reshma and Shera, यस,
That's Bhishma Avshya, a yes. typical Rajasthani हाँ, composition composed by Jaydev ji. yeah. Re sa 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 ni sa re sa dha pa ni sa dha ma pa ma dha pa ma re sa. ओ तू चंदा मैं चांदनी, तू तरुवर में शाख रे, तू बादल मैं बिजुरी, तू बादल मैं बिजुरी, तू पंछी मैं पाख रे, तू बादल मैं बिजुरी, तू पंछी मैं पाख रे, तू बादल. देखिए Amazing पूरा वेदा मांड रहमान, का, नव्या, बहुत सुंदर. सुनीता तन्वीदार, yes, yes, yes. यस, Amazing, amazing. पूरा ये जी, जी. फोक जो इसका ट्यून है, हाँ, है ना? बहुत सुंदर. जी, तो बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बहुत. कॉम्पोजिशन है. और उसके बाद तो जी. अभी ये हमने गज़ल का मूड देख लिया, हम्म, केसरिया बालमा लॉन्गिंग का मूड देख लिया, हाँ, थाड़ी रहियो का मूड अलग था. अभी ये तू चंदा मैं चांदनी, हाँ, उसका थोड़ा सा मूड अलग था. जी, तो फिर भक्ति गीत क्यों पीछे रहे? तो भक्ति गीत बिल्कुल. जगजीत जी का गाया हुआ एक भक्ति गीत है, ओ वाह, क्या बहुत ही बात है. तो ओ रसिया ओ रसिया रे, मैं तो शरण तिहारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी. नहीं साधन बल वचन चातुरी, नहीं साधन बल वचन चातुरी, एक भरोसो गिरधारी, एक भरोसो गिरधारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी, रसिया मैं तो शरण तिहारी. देखिए ये पूरा, पहली बार सुना ये भी. वाह. हाँ, ग्रेट, ग्रेट. जी, इनफैक्ट मेरे ख्याल से चित्रा जी का भी एक गाया हुआ गाना है, अच्छा. कृष्ण भगवान का, वो भी भक्ति गीत. ओ जशुमति नंदन ब्रजबर नागर, जशुमति नंदन ब्रजबर नागर, शब्द भूल रहा हूँ मैं. हो गोपी परण धन मदन मनोहर, गोपी परण धन मदन मनोहर, कालिया दमन निधान, हो जशुमति नंदन ब्रजबर नागर, गोकुल रंजन का, गोकुल रंजन का. क्या बात है, क्या तो बात. देखिए ये पूरा
ये कि इतना फ्लेवर है, देखिए इन सभी हाँ कॉम्पोजिशंस में मांड का बिल्कुल पूरा पूरा एकदम बिल्कुल, वो भर के। फ्रेज जो आप कह रहे थे, हाँ हाँ। जी। हम्म, अभिमान का भी गीत ही इस पे है क्या? अब तो है तुमसे हर खुशी हाँ, अपनी। वो लिखा तो है उसमें, बट वो हाँ उसमें आपको मांड का उतना फ्लेवर नहीं मिलेगा, हाँ हालांकि नहीं, वो एक अच्छा। बैजू बावरा का एक गीत है, हाँ बचपन की बचपन मोहब्बत। की वाह वाह वाह, मोहब्बत को लेजेंडरी सॉन्ग, लेजेंडरी। दिल वाह से न जुदा करना, जब याद मेरी आए, वाह। तुम दिल से दुआ करना। मिलने की दुआ। हाँ, मिलने की दुआ, हाँ, मिलने जी की दुआ करना। जी। हाँ वाह या सो वो जी। मांड में है। क्या बात। और फिर ये क्या लिखा है, कोई एल्बम पिया बसंती एल्बम में धीमो रे चले रे, हाँ, क्या वो बड़ी। मुझे पता नहीं, वो हाँ वो कहते तो मैंने भी हैं, नहीं बट सुनाई। वो मैंने कभी अच्छा, सुना नहीं है, तो वो ओके, हाँ। ठीक है। बट हाँ ये तो ये कुछ कुछ जो गाने देखिए, अलग अलग मूड के गाने इसमें हमने कवर हाँ किए मांड में, जी गजल, भक्ति गीत, विरह, जी जी खुशी, जी लव, so all जी। these moods covered the हम्म, same set of swars, rag राइट। mishra mand, right? वाह जी जी। So yeah, and then well, there are actually lots of songs in this rag, so if हम्म people were to search a little bit, हम्म and in हम्म fact there are, I'm pretty sure there could be other regional songs also in हम्म this rag, because it's a very popular melody, you know. ओह यस। हम्म So it's for people to हम्म। maybe take a look, search, and then Dig more, या। and maybe actually post it in the comments. That could be a good idea. यस Maybe you should यस। give homework to people, I think, like a weekly homework. Everybody should add Whatever one more songs I song. missed, I think Yes, they can actually post it in the comments. That will be pretty interesting. हाँ That will right, keep them going. yes, and we can People who are discuss in the watching next episode. regularly, so it will be a Yes, good homework for them. And maybe yes, inspired by them, others also will start looking and searching for yes, songs based on that particular rag, right? So I think it will be yes, yes, interesting. yes, So people, yes, homework for you. yes, good idea. And the other thing that I would want to suggest is, of course, as I keep saying every time, do post your comments, your thoughts, your Yes. feedback. Uh-huh. Uh, Feedback in two ways. One, if you feel that we could do this in any better way, please do Mhm. suggest that. And secondly, if you have a rag in mind, Oh yeah. do post that. I think that will be very interesting. Hmm. Yeah, but of course, do post it like uh, well in advance so that we get some time to prepare. Hmm. But yeah, so do post that. That will be pretty interesting because Hmm. there could be so many rags. Of course, there are rags that we have not taken which are Hmm. extremely popular, because we Hmm. on purpose wanted to deal with rags which are not commonly talked about. Hmm. But then, of course, we are going to talk about the popular rags also. So if people Hmm. have uh, some rags in their mind, please, I would request all of you to come up with your ideas. And we also had to do a repeat episode of some of the earlier rags that we did, Hmm. just to Hmm. cover the vast amount of Hmm. music that's there in those rags. Hmm. So that's also the thing. And yeah, so uh, so all of you have two sets of homework to do. One is to suggest songs from the rag that we did today that we missed, and secondly to suggest a rag, to think of a rag, right? Yes. So with this, happy listening, stay safe, stay healthy, and we Yes. will be talking to you again next week. Till then, uh, Namaskar. to you Pankaj ji, namaskar, and namaskar to all the Namaskar. viewers and listeners. Thank Yes. you. Thank you.